सो लेट्स टेक यू अराउंड द हॉर्सशू कैफ़े जो मैंने रिसेंटली विज़िट करा। सो इसकी एड्रेस एंड डिटेल सारा आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस इसका जो वे था दैट वाज रियली मेस्मराइजिंग। रास्ते बहुत अच्छे थे एंड इट वाज लाइक पूरा विलेज एरिया से हमें लेके जाना पड़ा एंड इट वाज रियली आई कैचिंग। So finally this cafe is here. So this was the entry guys, and let me tell you they charge 50 rupees per person, so like around हमें 250 rupees यहाँ पे एंट्री में ही देने पड़े। That was really not expected and थोड़ा सा मुझे out of budget लगी ये चीज़। So this is the inside view guys, and they have ample amount of space। बहुत enjoyable, बहुत activities हैं अंदर for the kids। So badminton they have kept and this bat ball, even they have horse riding। And some of the activities they were chargeable। So this is the outside like sitting है इनकी, and this is the horse riding area। So for the kids it was 200 rupees and for the adults it was around I guess 250 rupees, and they give 5 rides in that। So this is the inside cafeteria। So if you feel like बहुत अब जैसे गर्मियाँ हैं you can sit inside in the AC। बाहर आपको उस चीज़ का थोड़ा सा रहेगा if you are coming during summers। So यहाँ पे we went for the ticket of horse riding for my kid। So it was around 200 rupees। So ambience was really nice। थोड़े पुराने स्टाइल से बना हुआ है but it was fine। And this is a cute little aquarium outside। So guys let me tell you, if you are going to visit this in summers तो बाहर mosquitoes का issue रहेगा, like bundle of mosquitoes you are going to get around you on your head। So be very careful and do apply mosquito repellents। So this was like 5 rides they gave in this horse riding। So kids really enjoyed that। And yeah, if you are visiting in winters then definitely it's going to be treat for your eyes। बहुत अच्छा लगेगा बाहर बैठना एंड ऑल, बट जैसे अगर गर्मियों में जा रहे हो थोड़ा सा ये इशू रहेगा। और हर चीज़ का they were like it was chargeable। So like you need to pay like $100 or $200 for every these rides और जो भी यहाँ पर चीज़ें थी। So it was like a kind of farm जिसमें they have kept some activities and cafeteria and everything for the visitors। So like animals भी थे। So this was like for free of cost। ये सब चीज़ें बीच में थी, rides and all। So like you can spend a day like half a day यहाँ पर आप आराम से easily कर सकते हो। So you are going to love this place। ambience इसका बहुत अच्छा है। So like they have ample space guys, बहुत like space है, बहुत huge है। and yes at the end थोड़े यहाँ पे cages में इन्होंने animals रखे हुए हैं like of different species। This I didn't like actually because animals की यहाँ पे condition wasn't that good। तो बहुत एज थे बीच में और कई ऐसे थे like few of them were dead already and I don't think इतनी केयर करी जा रही थी यहाँ पर। So that was really heartbreaking to see। So just for the tourist attraction ये चीज़ें रखना I don't think that it's it's advisable। and yeah so I think ये चीज़ें हटानी चाहिए, इनको ओनर्स को ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। rest of the things were fine।
सो यू कैन विज़िट, वन टाइम विज़िट है यहाँ पर, बट या अगर समर्स में विज़िट कर रहे हो तो मॉस्किटोज़ का खास ध्यान रखना गाइज. डू अप्लाई दोज क्रीम्स एंड लोशंस ऑन योर बॉडी, इवन ऑन योर किड्स बॉडी. सो रेस्ट इट वाज फाइन. अगर वेदर अच्छा है तो डेफिनेटली डू गिव अ ट्राई. एंड फूड की बात करी जाए तो वी डिडंट ट्राई मच एज यू नो वी वर ऑलरेडी फुल. मैंने जस्ट ये विज़िट करना था and my husband just had Maggi, so Maggi is always, you know, it's delicious, so can't really say about the food. And yeah, I hope that you really like this video and do give a try and share your feedbacks as well if you have already visited this place. And yeah, so take care guys and bye.